Good evening. You're watching Hornbill TV's Primetime News. First, the headlines. The United Nations on Friday officially declared a famine in Gaza, the first in the Middle East, with experts saying 5 lakh people were facing catastrophic hunger. Ranil Wickremesinghe, Sri Lanka's former president, has been arrested for alleged misuse of government funds. Wickremesinghe was taken into custody by the Criminal Investigation Department on Friday for misusing state funds for a private overseas trip when he was a president. Prime Minister Narendra Modi on Friday flagged off the Amrit Bharat Express running from Gaya to Delhi. The Supreme Court on Friday modified its earlier ruling in a case involving stray dogs. It has now directed authorities to release a canine's pickup for sterilization and immunization. Now the news in details. The Supreme Court on Friday modified its earlier ruling in a case involving stray dogs. It has now directed authorities to release the canine's pickup for sterilization and immunization. A bench comprising of Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta and Justice N.V. Anjaria states the earlier order, which instructed the municipal authorities in Delhi to begin rounding up stray dogs for all areas, prioritizing vulnerable localities and to establish shelters, thereby prohibiting their re-release. In the new ruling, the bench clarified that the stray dogs should be released except those that were infected with rabies or exhibiting aggressive behavior. They shall be dewormed, vaccinated and sent back to the same area, the order said, adding that no public feeding of dogs is allowed. The bench also reiterated some clauses in the August 11 order that stated that no individual or organization should obstruct the municipal authorities from picking up the dogs in terms of the ABC rules. The court also said it would transfer to itself the petition filed in the High Court seeking the creation of Pan-India policy, thereby extending the scope of the matter beyond the Delhi NCRC region. सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो एनजीओज थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्रीशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं, तो बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका वेलकम करते हैं। सर, इसी में साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी कंडीशन में स्ट्रे डॉग्स को सड़क पे खाना नहीं खिलाया जाएगा। जो एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक स्पेसिफिक जगह डेडिकेट करेंगी स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने के लिए। देखो, अभी मैंने उस फैसले को भी पढ़ा नहीं है और ये बहुत ही वेलकमिंग फैसला है कि ठीक है कि डॉग्स को भी पता होगा कि यहाँ पर उसको खाना मिलना है, वो वहीं पर ही आएगा, जगह जगह गंदगी नहीं होगी और डॉग्स की कंसंट्रेशन भी ऐसे नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छी बात हो। जो इवन जो डॉग फीडर्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी हैरेस होते थे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो बहुत अच्छी गाइडलाइन है। एक बार फैसला पढ़ लेंगे तो उसके हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मर्सी फॉर एनिमल्स इंडिया फाउंडेशन। सर, आज जजमेंट आया है 11 तारीख को, जो कहा गया था जो कैंडिडेट्स हैं उनको वही छोड़ा जाए, क्या आया है जजमेंट में? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है पुरानी 11 अगस्त की जजमेंट के पैरा 11 के 3 और 4 जो सेक्शन था उसको उन्होंने अबेंस में डाल दिया, यानी कि उसको उन्होंने होल्ड पर डाल दिया। 3 और 4 पैरा यही बोलते थे कि इन जानवरों को उठा के शेल्टर्स में डाला जाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्शन दिया है कि जो भी जानवरों को सड़क से उठाया जाएगा उनको सिर्फ इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के लिए उठा के वापस उनके एरियाज में दोबारा से छोड़ा जाएगा, जैसा कि एनुअल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 बोलते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक एक्सेप्शन रख दिया कि अगर कोई रेबीड डॉग है जिसको रेबीज हो चुका है, वो इसकी कैटेगरी से बाहर रखे जा रहे हैं, पर बाकी जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके ऊपर ये लॉ अब लागू होगा दोबारा से कि उनका स्टरलाइजेशन करके उन्हें वापस उनके एरिया में डाल दिया जाएगा एज पर एनुअल बर्थ कंट्रोल रूल्स। सर, दोबारा सुनवाई कब के लिए बता दिए गए? 8 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये मैटर लिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात बोली है कि पूरे देश के जितने भी कोर्ट्स में ऐसे कोई सिमिलर मैटर्स अगर लंबित हैं
तो उनको सबको टैग करके सुप्रीम कोर्ट में ही डाला जाए। इसको कैसे देखें? देखिए, सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छी जजमेंट उन्होंने दी है और यही रूल भी था। मैं आपको बताना चाहता हूं 2013, 14, 15, 16, 17, 18 में लगातार हाउस में जब मैं नगर निगम में था, हम एक मुद्दे को उठाते थे कि आपके पास स्टाफ तो है नहीं, तो आप इनको स्टेरलाइज कैसे करोगे। जिस आरडब्ल्यू की कंप्लेंट आ गई, जो पार्षद विधायक स्ट्रांग है, तो इनका तो स्टेरलाइजेशन हो जानी चाहिए थी। और अब तक पिछले 12 से 14 सालों में करोड़ों रुपए का फंड स्टेरलाइजेशन के नाम पे एमसीडी ने खर्च करा, तो एक बहुत बड़ा स्कैम था। और जिस तरीके से हमारे एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया पे लोग सामने बढ़ चढ़ के उन्होंने एक बात को रखा कि जिसको रेबीज है, जो एग्रेसिव है, उसको डेफिनेटली हटाना चाहिए, परंतु जो जीव किसी को कुछ नहीं कर रहा, आप उसको कहां उठा के लेकर जाओगे? क्या प्लान है आपके पास में? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरसेप्ट अगर नहीं आते तो दिल्ली में तो इतने ज्यादा इश्यूज हो जाते। जिस तरीके से पिछले 14-15 दिनों में इन प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने उठाकर पीटा, महिलाओं के साथ अत्याचार करा, मुझे लगता है इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और फिर से धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी। परंतु एमसीडी को भी जो ये पानी के इंजेक्शन लगा के स्टेरिलाइज करते हैं, उस पर भी एक जांच करनी चाहिए कि कितने करोड़ों रुपए का घपला इन मासूम कुत्तों के नाम पे इन अधिकारियों ने करा, उस पर भी बहुत स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए। Former Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe was arrested on Friday on allegations of the state funds misuse. Citing officials familiar with the matter, where Newswire reported that the former Sri Lankan President was arrested after appearing before the Criminal Investigation Department in Colombo. As per sources, his arrest is linked to the allegations of using state funds to cover the expenses for a private visit to London, where he had to attend a university graduation ceremony. It was further reported that the investigators claimed that which formed a part of a wider overseas tour was not an official engagement but was financed with government money. Earlier in August, former Presidential Secretary Saman E and former Private Secretary Sandra Pereira were questioned over their roles in arranging the visit. Ranil Wickremesinghe has served as Sri Lanka's president from 2022 to 2024. Dr. Dr. Maina, ex-MLA, party working president, Victor Casing, Babu Misani Masalpa, Vedana, spokespersons, office bearers, ex-MLAs, PCC members, Kumbamaktu, Madhya Pradesh Congress Committee, Akili, Taramoksari, Vedana, Asim Raba, Kaithanajaniba, Kaithanajaba, Babu Misani. The United Nations on Friday officially declared a famine in Gaza, the first in the Middle East, with experts saying 5 lakh people were facing catastrophic hunger. UNAID Chief Tom Fletcher said the famine was entirely preventable, saying food could not get through the Palestinian territory because of the systematic obstruction by Israel. But Israel's foreign ministry immediately hit back, saying there is no famine in Gaza. In a statement, it slammed the report by the Rome-based IPC panel, saying it was based on Hamas lies laundered through organization with vested interests. UN agencies have for months been warning of the deterioration of humanitarian situation in the Palestinian territory. In its latest update on Friday, the IPC said as of the August 15, 2025, famine with reasonable evidence is confirmed in Gaza Governorate. Gaza City, which covers about 20% of the Gaza Strip, famine is projected to expand to Deir el-Bahal and Khan Yunis governorates by the end of September, which would cover around 2/3 of the Palestinian territory. According to a report, after 22 months of relentless conflict, over 500,000 people in Gaza Strip are facing catastrophic conditions characterized by starvation, destitution and death. This number, based on information gathered between July 1 and August 15, is expected to increase
with nearly 641,000 people, nearly a third of the population by the end of September. The IPC said this was the most severe deterioration in the situation since it began analyzing hunger in the Gaza Strip. It said that the chance was driven by the sharp escalation in war between Israel and Hamas and the resulting massive displacement of people combined with the severe restrictions to access to humanitarian and commercial supplies of food. In earlier March, Israel completely banned aid supplies from Gaza before allowing every limited quantities to enter the end of May, leading to severe shortages of food, medicine and fuel. Campaigning to seek support for NDA's vice presidential candidate, CP Radhakrishnan, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis reached out to Shiv Sena UTP Chief Uddhav Thackeray and the Nationalist Congress Party SP Chief Sharad Pawar on Thursday. Fadnavis said Uddhav Thackeray told him that he would discuss about it with his party, while Sharad Pawar told him his party will be backing the candidate fielded by the opposition. Earlier, Shiv Sena UTP leader Sanjay Raut said besides Fadnavis, Defence Minister Rajnath Singh also called Thackeray and urged him to extend support to the NDA pick. The NCP, SP, Shiv Sena, UTP are part of the opposition Maha Vikas Aghadi in Maharashtra along with the Congress. The three parties are constituents of the opposition India bloc at a national level. मैंने सम्मानीय श्री उद्धव ठाकरे जी और सम्मानीय श्री शरद पवार जी को फोन किया था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जो मुंबई के वोटर हैं उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तैयार किया गया है या उनको बनाया गया है। उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है एक प्रकार से नॉन पार्टीसन माना जाता है क्योंकि इस चुनाव में कोई व्हिप नहीं होता। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि चूंकि आप महाराष्ट्र की अस्मिता को मानने वाले लोग हैं तो आपने भी महाराष्ट्र का एक वोटर ये देश का उपराष्ट्रपति बन रहा है, इसलिए आप उन्हें समर्थन दीजिए। इस प्रकार का मैंने उनसे निवेदन किया था। मुझे उद्धव जी ने कहा कि हम सबसे चर्चा करके फिर निर्णय करेंगे और शरद पवार जी ने कहा कि चूंकि सारा अपोजिशन साथ में आकर एक कैंडिडेट खड़ा कर रहा है तो हमको उनके साथ जाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर Prime Minister Narendra Modi on Friday flagged off the Amrit Bharat Express running from Gaya to Delhi. Speaking at the inauguration, the Prime Minister said that the Amrit Bharat Express is the country's third modern train after the Vande Bharat and Namo Bharat trains. He added that the tri-power of trains would transform Indian railways. The Amrit Bharat Express is a new generation train offering state-of-the-art facilities at an affordable cost. A total of 9 Amrit Bharat trains are currently operational across the country, including on routes such as Darbhanga, Anand Vihar Terminal, Sastra, Lokmanya Tilak Terminus, Rajendra Nagar Terminal, New Delhi, Babundam Motihari Anand Vihar Terminal, Darbhanga Gotni Nagar, Malda Town, and these are few the indigenous, the routes are extensionally expanded. This indigenous train strengthens the spirit of self-reliance India, whose identity is rooted in the 3 aspects including passenger convenience, energy saving and environmental awareness. Amrit Bharat Express is also very safe from the technical point of view. Equipped with the Kavach system, this train has been fitted with a semi-automatic coupler, a crash tube and an EP assisted brake system so that the immediate braking can be done in the case of emergency. We'll take a quick break. We'll be right back. आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष
वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। শৈক্ষিক উৎকৰ্ষতা আৰু উদ্ভাৱনৰ প্ৰসাৰণৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন অনুপ্ৰেৰণা আঁচনিৰ অধীনত অসমত অৱস্থিত চৰকাৰী খণ্ডৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানত 2021 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2025 চনত PhD কাৰ্যসূচীত নাম ভৰ্তি কৰা পূৰ্ণকালীন গৱেষকসকললৈ 25,000 টকা আৰু দিব্যাংগ গৱেষকসকললৈ 40,000 টকাৰ একালীন সাহায্য আগবঢ়াইছে। আবেদনকাৰীৰ যোগ্যতা অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। চাকৰিত নিয়োজিত হ'ব নালাগিব। অসমত অৱস্থিত চৰকাৰী খণ্ডৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানত 2021 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2025 চনৰ ভিতৰত PhD কাৰ্যসূচীত নাম ভৰ্তি কৰা পূৰ্ণকালীন গৱেষক হ'ব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'ব নালাগিব। পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 10 লাখ টকাতকৈ অধিক হ'ব নালাগিব। অন্য আঁচনিৰ অধীনত উচ্চ মূল্যৰ বৃত্তি বা সুবিধা লাভ কৰা হ'ব নালাগিব। আবেদন দাখিলৰ সবিশেষ তথ্যৰ বাবে www.dids.assam.gov.in ত লগইন কৰক। আবেদন দাখিলৰ অন্তিম সময়সীমা 31 আগষ্ট 2025। One of the major routes of HIV transmission is unsafe sex. Protect yourself. Stop the chain of HIV transmission. Welcome back. Congress leader Rahul Gandhi visited the Kankar Ramani Masjid in Mungar Bikat, drawing a large crowd from the minority community. Prominent local figures including Mohammad Shahbaz Alam, Mohammad Rash Alam and Khalid Sultan Ramani and Mohammad Islam Ramani was present during the visit. Minority community voters in attendance voiced strong support for the All India Majlis-e-Ittihadul Muslimi Chief Asauddin Owaisi in the India Alliance. They warned that the failure to include Owaisi could lead to significant electoral losses for the alliance. The gathered crowds expressed frustration, stating that the minority community, which constitutes 20% of the population, is not being given due respect for the representation within the India Alliance. Earlier today, Congress MP and the Lok Sabha leader of the opposition Rahul Gandhi arrived in Jamalpur on the 6th day of the Voter Adhikari Yatra, aimed at addressing concerns over alleged voter frauds. The 16th day Yatra is aimed at raising awareness about the alleged irregularities in the voter list and what opposition leaders are calling a case of vote chori, vote theft. Covering about 1,300 kilometers across 20 districts, the Yatra is scheduled to conclude in Patna on September 1. CPI-ML leader Dipankar Bhattacharya said during the Yatra there has been no improvement in the SIR. He said he suspects that 65 lakhs votes were excluded during enumeration, while documentation 1 crore votes will be excluded. That's why the people will fight for this. पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, वो तो समय बता देगा। लेकिन एक बात तो हम लोग जो देख रहे हैं कि SIR का जो हमला है उसमें कहीं कोई सुधार नहीं है। नाम जो कटे गए उसके बारे में जो हम लोग शिकायत दर्ज कर रहे हैं, आज तक चुनाव आयोग ने एक भी शिकायत को आप देखेंगे कि 0000 बोला जा रहा है कि किसी पार्टी की कोई शिकायत नहीं आई, जबकि हर रोज हमारे लोग जमा कर रहे हैं, उसके हमारे पास पावती रसीद तक है, लेकिन वो नहीं है। इसीलिए चुनाव आयोग जिस तरीके से इस SIR को चला रहा है वो तो बिहार में वोट काटने वाला ही है। वोटर लिस्ट से हम बाहर जा रहे हैं और हमें तो आशंका है कि 65 लाख तो एन्यूमरेशन के दौर में गया और अभी जब डॉक्यूमेंट वाला दौर आएगा तो और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम चला जाएगा। इसीलिए इसके खिलाफ लोग लड़ेंगे। हम दोनों बातें हम जनता से कह रहे हैं। ये एक तो यात्रा है, अच्छी बात है, एक माहौल बन रहा है पूरे बिहार में, लेकिन हमें लड़ना है। हर BLO
हर पंचायत में, हर प्रखंड में, वहाँ BLO से लड़िए, BDO से लड़िए, SDO से लड़िए, DM के वहाँ लड़िए, लड़ करके एक एक वोट की गारंटी करिए कि एक एक वोट वोटर लिस्ट में रहे और फिर उस वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, चोट कीजिए सरकार। Deputy Chief Minister of Karnataka D.K. Shiva Kumar on Friday, in a surprise move, invoked the RSS anthem during a heated discussion in the assembly of the Jinnaswamy Stadium stampede that claims 11 lives. Shiva Kumar's recital came when the BJP legislators accused Shiva Kumar of being an abettor of the stampede as he created mass frenzy. He alleged that Shiva Kumar went to receive the RCB team on their arrival at the Bengaluru airport, waved the Kannada flag throughout the journey from the airport to Jinnaswamy Stadium. Replying to the accusations, Shiva Kumar said he was a member of the Karnataka State Cricket Association and the Bengaluru in-charge minister. He said he had gone to the airport and the stadium on June 4, held the Karnataka flag, which the RCB kissed the cup, as well as had done his job. To this, leader of the opposition BJP R. Ashoka reminded Shiva Kumar that he once said he wore RSS chaddi, after which Shiva Kumar recited the anthem. The opposition welcomed the anthem by thumping the table, but there was an absolute silence in the Congress camp. RCB ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ನಾನು KCA ಮೆಂಬರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದವರು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟನೂ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯ್ತಾ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಲಾಯಕ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಅಸಾಧ್ಯರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ ಗರಡಿಲ್ ಬೆಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗರಡಿಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ RSS ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿ ಸುಗಮ್ ವರ್ಧಿತೋಹಂ ಮಹಾಮಂಗಲೆ. ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡತಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರನು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಎಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಪಾಪ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗುಜರಾತ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಿಡಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಏನಿವೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದು. Later, however, when asked if there was a political message behind him reciting the RSS anthem, the Congress leader said he was born a congressman. He has done research on all political parties, and as a leader, he should know who his opponents are. He said he just learnt about the RSS and its history. The incident comes just days after Shiva Kumar struck a contrasting note on August 15, saying the RSS doesn't have any history compared to the Congress legacy. I am a born congressman. My blood, my life, everything is there. But I have made a research on non-political parties. I have made a big research on non-political parties. I know how RSS is building institutions in Karnataka. I, being a leader, have made research. They are acquiring every schools in every district, taluk quarters, investing a lot of money. They are trying to preach children. So as a leader, I should know who are my opponents and who are my friends. So I just try to know about the RSS, the history of RSS. I know them.
Politically, we have a lot of differences. That is a different issue. But BJP also should know that I have gone very deep. That's all for now. Keep watching Hornbill TV. Ready? 3, 2, 1, cue. And we all need a little more clarity on the details. About life, people and events that truly matter. Because sometimes news is more than mere information. From credible news organizations, credible news, and from credible and award-winning journalists. Because proper news can not only inform our lives but also change the way we look at it. In-depth and straight to the point, because the truth deserves clarity. We pursue events that are not only important to you but also useful for our life's perspective. We are Hornbill TV.